Why? You know something? Actually, it's my. Listen to my daughter. She told me, Mom, don't do this on Wi-Fi. Use your 4G. That is And happening. I know. I'm using my Wi-Fi, which is behaving rather badly today, and अच्छा I forgot इस बार आपने गुफ किया कि मैंने किया है. But I told my daughter told me, Mom, please use 4G and don't use Wi-Fi because Wi-Fi बहुत fluctuate हो रहा है आजकल. I think बहुत ज़्यादा लोग use कर रहे हैं तो Wi-Fi. आजकल तो वाईफाई पर ही जी रहे हैं लोग. हाँ. क्या करें? Okay, Alka, quickly getting back to what I would like to ask you. And first of all, let me say it's very funny talking to you like this. I know. We speak another language normally, but our language is now very nice and. Alka ji, अभी आपसे ये पूछना है कि you have been, I mean, I won't say a child singer, but from a very young age you've been singing. And I know that about you, that you wouldn't have sung if your mother hadn't insisted on putting you through the rigors. और कई बार मैंने देखा है बच्चे रिजेंट करते हैं कि माँ बाप हमें बोल रहे हैं कि आप ये करिए, you have to do this, take this class, work on this, take this career. And I think when they grow up, sometimes they thank their parents. And I can't imagine if your mother hadn't pushed you, the world wouldn't have seen the Alka Yagnik blooming and being the singer that you are today. So, और ये बात मैं आपसे सुनना चाहूंगी, पर मैं एक आपसे शेयर भी करना चाहूंगी कि one of my friends told me कि बच्चे ने अगर बचपन में बोला है जिद करके नहीं जाना मुझे इस क्लास के लिए, and I don't want to do this and all of that, whether it's studies or sports or dance or music, तो माँ बाप बोलते अच्छा ठीक है भाई, my child doesn't like it. But sometimes you have to insist with your child. And somebody told me this, if I had been a child and not understood, मेरे पेरेंट्स तो बच्चे नहीं थे, उनको तो समझ थी ना, उन्होंने क्यों नहीं इंसिस्ट किया. आज देखो हम we are without any of our opportunities because our parents didn't insist. So what do you feel about that? Your mother pushing you and you. Actually, different people are made differently. I started singing on radio. I was in Kolkata. I was born and brought up there. At the age of 5, I started singing on Akashvani, there, radio. तब से I've been singing, and even before that I started learning. I was singing. 2-3 साल की उम्र से रेडियो सुन के गाने, दीदी के लता दीदी के आशा दी के गाने सुन के गाना, वो एक शुरू हो गया था सिलसिला वहीं से. So did you enjoy the रियाज वाला part कि अभी आज को बैठ के इतने घंटे सीखना है? I used to hate doing रियाज. Till today I hate doing रियाज, and that's a very very bad thing because I know the importance of it. It's very important to do रियाज, and everyone should do, must do. ये मैं सबको कहती हूँ, सब बच्चों को जो upcoming artists. But I don't know, I somehow cannot get. I can jam. You see, that's why if my mom used to sit with me and make me sing. She used to sing one palta, then I used to repeat the palta. That was okay. But अगर मुझे अकेले बोल दो हारमोनियम लेकर तुम सा रेगा करते रहो, I get very very bored. I don't know, I don't have that. But of course, I have forced and pushed myself. As long as my mom was alive, she was after me with the thing. चलो रियाज करो, रियाज करो, रियाज करो. And I was petrified of her. So उनके डर के मारे मैं करती थी. But by then you were already a star singer. My question is for parents जो सुन रहे हैं और कई youngsters भी सुन रहे हैं कि छोटी उम्र में we don't like certain things कि अभी parents बोल रहे हैं तो हम कर रहे हैं या क्यों कर रहे हैं, हम अभी मन नहीं है. But मुझे भी लगता था. हाँ, तो फिर मुझे भी लगता था. Flip side is if your mother had not persevered, तो आप शायद जिस मुकाम पे you reach, you would have never. Mummy was very very ambitious for me. She felt that I have an inborn talent and I should not waste it. I should make something out of it. कि दुनिया सुने कि इतना अच्छा गाती है या talent है जो भी. And I used to resent it that time because I was very lazy. I was a very not only lazy. I was very I was not interested in glamour and कोई मेरी फोटो खींच रहा है या कोई मुझे वो सब में शौक नहीं था. I used to live in my own world. I used to be in a dream world of my own. बचपन से. तो लेकिन मम्मी जब कहीं जाते थे, मम्मी बोलती थी गाना सुनाओ, तो आई यूज्ड टू गेट इरिटेटेड कि अभी नहीं गाना है, क्या मन है अभी, क्यों गाना सुनाओ. तो आई यूज्ड टू रिजेंट इट. यस, आई रिमेंबर रिजेंटिंग इट मेनी अ टाइम्स. And it's only later
as I went along and I grew up a little bit and I recorded a few songs, because I started recording very early in life. Mid-teens I started doing recordings for films. मतलब जब वो गाने जब आने लगे बाहर, रेडियो पे बजने लगे, फिल्मों में दिखने लगे, लोग पसंद करने लगे, लोग प्यार करने लगे, तो मुझे अच्छा लगा. Then I started enjoying the attention and then I started feeling no I must sing. And मेरा ये था कि अगर मुझे गाने को बोलो कहीं मुझे नहीं गाने, लेकिन if I sing I have to do it perfectly. I would rather not do something than do it badly. तो मेरा ये था कि हाँ, so that kind of a, आप गाती प्रोफेशनली हैं, बट नो अमाउंट ऑफ टेम्पटेशन कि आप इधर आइए हमारी पार्टी में गाइए, इतना पैसा देंगे करेंगे. यू आर वेरी एथिकल पर्सन. आपने कुछ डिसाइड किया. दो आई डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग रॉन्ग अगर जो सिंगर्स यू नो वेडिंग्स पे पार्टीज पे भी गाते हैं. इट्स देयर चॉइस. But your weddings पे and private parties like birthdays and anniversaries, I don't sing as a rule because पता नहीं, I feel that you know शादियों में लोग अपना खा रहे हैं, डांस कर रहे हैं, इधर they are not actually, they just want that there's an entertainer here and गा रहा है या गा रही है. I don't know, I don't feel very comfortable singing for weddings. But आप फ्रेंड्स के लिए और फैंस के लिए मजे से गाती हैं, तो let's have at least one song to start with. क्योंकि if I don't make you sing right now, जितने हमारे make me sing please. अच्छा एक बात ही बताओ. तो मैं गाऊंगी अगर आप गाओगे. कोई सिंगर का इंटरव्यू करो तो ऐसा लगता है कि आपको प्रूव करना पड़ता है कि हाँ भाई मैं वही हूँ, मैं गाती हूँ, कि बिना गाए कोई छोड़ता नहीं है. नहीं, but of course you are blessed with this divine voice. Of course. I am very fortunate. I am blessed, and God has been very, very kind. And thanks to my parents, honestly. At the end of it, it's thanks to them, especially my mom, who has brought me where I am. So you lose something in life, you gain something in life. I feel what I've gained is more than what I've lost. So it's never a perfect game. There's always. अच्छा भी सब बोल रहे हैं कोई सॉन्ग प्लीज. Love from Nepal, please जी, alka ji, sing something. So a lot of people want you to sing. Now you can't disappoint your fans. There is no escape for me, friend. Okay, what should I sing? Anything? Any song of your choice. मैं मेरे favorite बोलूँगी तो you say every time. एक दिन आप यूं हमको मिल जाएंगे, फूल ही फूल राहों में खिल जाएंगे. मैंने सोचा न था एक दिन जिंदगी इतनी होगी हंसी, झूमेगा आसमां, गाएगी ये ज़मीं. मैंने सोचा न था, मैंने सोचा न था. Thank you, my God, I love this song. And अलका, आप मेलोडियस रोमांटिक गाने तो बहुत अच्छे खूबसूरती से गाते हैं. जब कोई एक विकेड नॉटी बदमाश टाइप का गाना हो जो आपकी पर्सनालिटी से एकदम अलग है, तो वो आपके लिए do you really think मैं बिल्कुल बहुत सीधी हूँ मैं ना? बिल्कुल, I know that. you cannot reveal my naughty side, Poonam, I know that. अभी मेरी naughty side की बात नहीं कर सकते हम, ठीक है? Not here. We have to be friends and मस्ती together. क्योंकि you have to let your hair down when you're with friends. Yeah. हमेशा आप स्टार अलका याग्निक नहीं हो सकती ना, मैं स्टार पूनम ढिल्लन हो सकती हूँ. But tell me, which was the most difficult song जो आपको गाने में लगा ये मैं कैसे गाऊँ, ये क्या गाना है, और गा तो रही हूँ बट बड़ा मुश्किल है. चुलबुले गाने भी अच्छे लगते हैं गाने में. Like I have a lot of them. तो आइटम नंबर जिसे कहते हैं, हमारे आइटम नंबर तो फिर भी डिसेंट होते थे. आजकल के आइटम नंबर तो कहीं और ही हैं. Like 1 2 3 इज चुलबुला गाना, छम्मा छम्मा इज चुलबुला गाना. देन बहुत से गाने हैं जो कि तो फास्ट नंबर्स, यू नो, तो डांस नंबर. एक दो लाइनें गा के बताओ मुश्किल वाले गाने कैसे, थोड़ा चुलबुला. कौन सा सुनाऊं? जो भी आपको लगता है. आपने बाजीगर सॉन्ग, बाजे रे मेरी पैंजड़ियां, छम्मा छम्मा बाजे रे मेरी पैंजड़ियां. तेरे पास आऊं तेरी सांसों में समाऊं राजा, तेरे पास आऊं तेरी सांसों में समाऊं, तेरी नींदें चुरा लूं छम्मा छम्मा,
ए चम्मा चम्मा देखा देखी दिल मेरा जुड़ गया रे लेके परदेस से दिल उड़ गया रे. So one of those. ये चुलबुला वाला अलग है. अच्छा, ये सब तो समझते हैं लोग कि आप बहुत रियाज करती नहीं है, आप ये करती है. नेचुरल वॉइस होना तो ठीक है, बट परहेज करना पड़ता है खाने में, पीने में, इसमें कि आप ये नहीं खा सकती, पी नहीं सकती, गला कल खराब हो जाएगा. You have to do a lot of parhez in your food. Actually, when I was much younger, I used to have a lot of problems because I had this chronic tonsillitis. Tonsils फूल जाते थे बार बार and antibiotics and this and that. But the doctor told me that since you're a singer and you're using your voice and your tonal quality is your asset, it's better not to do a surgery. Yeah, because there may be a very minute chance. So many years back, maybe they didn't have the know how to do a very kind of. अभी तो सब बढ़ गए. Things have become much more. हाँ. 1% chance भी हो, they have to tell you ना कि there is a chance कि आपकी आवाज. So they said there's a chance that their voice might maybe change the tone a little bit, or some doctors also said that tonsillitis करा लो, but that may not be a good idea because the tonsils are kind of, they protect your throat also, because all the germs that go to the tonsils takes it prevents it from going inside. So I was getting very mixed advices, and of course वो आवाज के साथ वो chance लेने वाली बात थी, तो बहुत प्रॉब्लम होती. So I never used to have ice cream, thanda, mirchi, khatta. But of late, last few years, I got so fed up because I've been doing this since the age of 5, 6. Mom used to say no ice cream, no this thing. तो मैं इतनी तंग आ चुकी थी कि अभी मैं कुछ सालों पहले मैंने बोला बाहर में जाए, मैं सब खाऊंगी, हो गला खराब तो हो, ठीक हो जाएगा अपने आप. So I've noticed my throat has become stronger now. I mean, it doesn't get affected so fast like it used to. I mean, I don't catch infection so fast now. इसलिए कहते हैं जैसा बनाओ अपने आप को वैसे ही बन जाता है. Your system. थोड़ा सा एक्सपोज तो करना पड़ता है, नहीं तो आप पिंजरे में बच के रह नहीं सकते. तो कब तक कब तक. अच्छा, now your daughter didn't follow your footsteps at all. तो उन्होंने जब बोला कि मुझे गाना नहीं है और मुझे फूड एंड हॉस्पिटैलिटी में जाना है, and today she is doing so well in that field, how did you react? कि क्या हुआ मेरी बेटा? हाँ, did you feel bad that your daughter... as a child, no, not at all. I never felt bad at all. When she was छोटी थी, तब वो, can you hear me? Yeah, I can. I said when she was a small girl, she used to sing, and she used to sing pretty well. And my mom, being the ambitious woman she was, she used to say, "Isko sikhao, isko bhi singer bana." I said, listen, but I noticed that she didn't really have a passion for. She had a passion for music in the sense that she used to listen to music, she used to love the songs, and she used to understand music very well. Like if I sang, मैं घर में गुनगुना रही हूँ, so she used to come and say, "Mom, ये line तुम आपने गड़बड़ गाई. You haven't sung that line properly." So she had a very sharp ear for music. But she didn't want to take it up as a profession or something. She was never keen on that. So I asked her, I said, if you want, we will give you intensive training, sikhayenge, you want to pursue it. She said, no, I don't want to pursue it. I like music, I want it to be a hobby, I want to enjoy music. If I want to hum, I'll hum. I listen to music all the time, but I want to do something else. So I told her, okay, go after, because I feel अगर passion नहीं हो तो नहीं होता है, फिर वो बात नहीं होती. और किसी को जबरदस्ती नहीं कराना चाहिए. जी, वही आप जबरदस्ती कराए तो आदमी एक डायरेक्शन में चला जाता है और फिर उसमें समझ जाता है. But that was your choice because आपने देखा था कि Poonam, another thing, very important. I feel that her talent was not of that level. Music का जो talent था ना उसका you can make out ना कि एक बच्चा talented है, अच्छा गाता है, but एक बच्चे का talent ऐसा है कि वो she will blow up everyone. Yeah. So I felt, because I'm very critical of, so I felt that she doesn't have that level of talent in music. I didn't have that level of talent. She didn't have that level of talent. So I didn't want to push her, and then
maybe she may be good, she may not be that good later on जाके successful नहीं भी हुई तो उसको frustration हो जाएगा. इससे अच्छा at least she will say she will be happy that I let her do what she wanted to, that I didn't push her into another direction. That is true. Actually, to recognize and be honest कि मेरे बच्चे में उतने हुनर नहीं है जो मैं समझती, because we all like our we are blind to our children. We feel कि उनके जैसा कोई है ही नहीं, उनके जैसा टैलेंट कोई है ही नहीं. Of course मुझे भी लगता है मेरी बेटी जैसा कोई नहीं है, but उसका जो म्यूजिक का टैलेंट था, that was, I felt she's good, but I've noticed that your niece is singing very, very confidently. My niece sings, yeah. She's very talented. She does a lot of Western music as well as, and she acts. She's a good actress as well. Yeah. And so she's performing arts में dance बहुत अच्छा करती है. So she's a complete package. So I've seen that she's very, very talented, and yeah, she is good. Yes, जब उसको opportunity मिलेगी, and I think with your guidance, I'm sure she'll. थोड़ी opportunity मिली है उसको अभी, और अभी क्या हो रहा है ना, youngsters, it's their time to blossom, and this COVID thing has come, so सब कुछ रुक गया है, मामला. That is happening to all the youngsters, my kids, yeah. your kids, people. Opportunity वगैरह सब अभी फिलहाल थमी हुई है सब कुछ. But let's all be patient and not lose patience and expose ourselves to any kind of danger. Of course. बच के बैठे हैं तो अपने आप ख्याल रखना चाहिए. अच्छा, आपकी इंस्पिरेशन आपने बार-बार कहा है लता मंगेशकर जी रही हैं. So how often have you actually done anything in front of her? जो उनका क्या comment रहा है? आपने उनके सामने गाने की हिम्मत की? अरे बाप रे, उनके सामने गाना मैंने मेरे मुंह खुला रह जाता है ऐसे. She's my goddess. She's always been my goddess and always will be. There was only one event which was organized basically by the Mangeshkars only. अच्छा. बहुत साल पहले शिवाजी पार्क में था. उसमें लता दीदी ने ही अपने किसी के थ्रू कहलवाया था कि अलका को भी बुलाना उसमें. So I had sung a few songs. I had shared the stage with her and sung a duet with her, but we performed in the same event. That is the only time. और वो भी पता नहीं गा लिया मैंने, but मुझे बहुत it's next to impossible for me to sing. Did she react? Did she tell you anything कि your voice? No, वो पहले से ही, मतलब काफी सालों से when she used to meet me, she used to say, बहुत अच्छा गा रही हो, मैं सब सुनती हूँ, बहुत आशीर्वाद है. She used to always हमेशा आशीर्वाद देती थी और प्यार करती थी. And I don't know, I just felt maybe I am prejudiced, I don't know what I felt that she had a soft corner for me. I had to have the softest corner for her, but I always felt that she liked me, and that was my good fortune. Why would anybody not like somebody who calls her the goddess, who gives her love, respect, inspiration, inspired by her? So obviously she is the great Lata Mangeshkar. But Poonam, she's the goddess for everybody. I mean, I'm not the only one. But she is someone, खास करके जो म्यूजिकल लोग हैं, म्यूजिक समझते हैं जो लोग, she is the last word in singing, and she is what I say. Her singing is what I say is perfection personified. Yeah, she is blessed. I think mostly वो सरस्वती जो बोलते हैं, जो बात पे बैठी हैं उनकी, उसके अलावा तो कुछ हो ही नहीं सकता. अच्छा, tell me, इतने non-ambitious होते हुए, I know you are very non-ambitious, you are non-pushy, you are all of those things. I'm not, I wouldn't say I'm non-ambitious. I am ambitious, but to a certain level. I don't want to go all out just for the sake of ambition, I was not that. जिस इंडस्ट्री में आपने कदम रखा उसमें इतना कंपटीशन था और मतलब अभी भी है, and you are one of the few artists who is still singing today after so many years. Lots have come and gone, and very, very talented people also. So what is the mantra which makes Alka Yagnik relevant even today? Well, I would say that I've been very lucky to get beautiful songs in my career. They're all evergreen songs. Today, as of the current scenario, I'm not doing too much of playback singing but the songs that continue to hold me and that I continue to sing are my evergreen songs, because people want to, and I've noticed that with time they're getting even more and more popular.
अच्छा, Like if I आपने कितने ब्यूटीफुल गाने ललित के साथ गाए. जतिन ललित बहुत अच्छे अच्छे गाने गाए. जतिन ललित, अनु मलिक, नदीम I know श्रवण. ललित hopefully should be coming on the chat. मैंने उसको I'm कहा sure. एक गाना तो आप उनका सुनाई दो, because they अभी are तो सुनाया ever. ना, एक दिन आप यूं हमको मिल जाएंगे, उनका ही गाना था. I know, but you are also favoring them. अच्छा, तो फिर आप बाजीगर का एक गाना सुना. बाजीगर का तो वही है. हो मेरा दिल था खेला, तूने खेले सा खेला, तेरी याद में जागू रात भर. डन 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 डन. बाजीगरो बाजीगर, तू है बड़ा जादूगर. बाजीगरो बाजीगर, तू है बड़ा जादूगर. हो मेरा दिल था खेला, तूने खेले सा खेला, तेरी याद में जागू रात भर. और अनु मलिक के साथ भी आपने बहुत अच्छे अच्छे गाने किए हैं. आई हैड अनु लास्ट वीक एंड ही ऑफ कोर्स, उनको तो रोकना गाने में कभी भी बोलना भी नहीं पड़ता. ही सिंग्स ऑन हिज ओन ऑल द बट आपने इतने म्यूजिक डायरेक्टर्स के साथ काम किए, इतने सिंगर्स के साथ, बट विद उदित नारायण एंड कुमार शानू, योर टॉप सॉन्ग्स हैव बीन विद दीज टू. उसके अलावा आपका मेल फेवरेट सिंगर कौन सा है? देखो, फेवरेट मेरा मेल सिंगर एक ही है, किशोर कुमार. My all time favorite. I am a die hard. किशोर कुमार है, लता मंगेशकर are my gods and goddess in my entire life. हाँ, बाकी बहुत से सिंगर मुझे पसंद है, but these are the main. Sorry. किशोर दा गाया आपने काफी? हाँ, मैंने गाया. वही तो मैं I'm telling you, I'm really blessed that way. I recorded quite a few songs with किशोर दा, and उसमें से वो गाना भी है ना, तुमसे बढ़कर दुनिया में न देखा कोई और, जुबां पर आज दिल की बात आ गई. कामचोर का. कामचोर का. एक दिन मतलब ये आशा जी ने कहा था कि वो कौन से सिंगर हैं, वो कौन गाने वाला है स्क्रीन पे, वो देखती हैं, उसके हिसाब से कोशिश करती हैं कि ट्राई टू गेट दैट एक्टर अदाएं इन इट. So do you feel that you also have to do that as an artist, or should the singer try to, I mean, the artist try to say कि ऐसे गाए हुए हैं उस अंदाज में गाऊं? और नहीं, actually क्या है, I don't know, I think by the grace of God, ऊपर वाले ने आवाज जो मुझे दी, मेरी जो क्वालिटी, टोनल क्वालिटी आवाज की, that it's pretty much universal. It goes with most of the heroines. Especially heroine. See, 90s era की जो heroines थी, they were all very feminine, docile, sweet. So my voice used to go. I feel with actresses who got that little street smart and that little vampish image. उनके साथ मेरी आवाज शायद उतनी ना जाए, but most of the actresses I've sung for, it's naturally blended with them. And कई बार तो ऐसा होता था, like many a times I would ask who's singing, so they would tell me Madhuri or Juhi, Kareena, Karishma, Aishwarya, जो भी, Rani Mukherjee. But there were many a times when they would say it's a new face. तो मैं like when I sang for Kareena's maiden film Refugee, all the songs, तब तक करीना की कोई फिल्म नहीं आई थी, so I didn't know how she talks and how she sounds on screen and something. But I don't know, I think my voice blended with her very well, and people said कि ऐसा लगता था वही गा रही है. तो I don't know, it's again ऊपर वाले का आशीर्वाद है. That did most actresses. बोल रहे हैं हमें अलका जी से बात करना है, but unfortunately Instagram doesn't allow us to add more people than 2. नहीं तो मैं सबको मौका देती अलका जी से बात करने का. ये सब जो लिख रहे हैं इनको प्लीज मेरा प्यार देना, मेरा नमस्कार देना, बोलना आप लोगों की वजह से मैं हूँ. प्लीज मुझे और मेरे गानों को ऐसे ही प्यार करते रहिए. और आई एम सॉरी, आई वुड लाइक टू टॉक टू ऑल ऑफ देम, बट आई can't respond to each one of them. I'm also feeling so bad कि हमारे इतने friends हैं. अच्छा, people love you on your television show जहाँ आप Little Champs को मौका देती हैं, and you're actually very kind to them. आप वो उनको डांटती वाटती नहीं है, समझाती हैं.
So what is the special take you have got from that show? Okay, matlab, Poonam, first of all, I like to do reality shows with kids only. Because बच्चों की जो एक aura होता है उनका, जब when you're working singing, when they are singing and you see these little children singing so beautifully with so much confidence, तो it's एक जो positivity और एक जो माहौल बन जाता है, it's very soul lifting. I really feel nice. And besides, छोटे बच्चों को आप जब guide करो, उनको tips दो, they take it very seriously. There's a lot of sincerity and a lot of purity in their nature. So हम जो बोलते हैं वो बहुत उनके लिए बहुत important lesson होता है, तो गौर से सुनते हैं. And also kids of that age are their vocal cords, they're very malleable. वो अपने आवाज उस वक्त उस उम्र में आवाज मोल्ड करना बहुत आसान होता है. एक बार आपके vocal cords, once you've reached your adulthood, vocal cords become rigid. They stop growing, or उनका वो बंद हो जाता है. उनकी जो बनावट है vocal cord की, वो पूरी एक बार बन जाती है. Then it's difficult to mold your voice. But as children, their vocal cords are still being formed, as such. तो उसको आप कह सकते हैं कि आप में ये कमजोरी है, इसको ऐसे गाओ, ऐसे रियाज करो या ऐसे सीखो. So that can be eradicated. जो कमियां हैं वो जल्दी निकल सकती हैं उस उम्र में, And besides, I came on your show once as a guest, and I must say I really enjoyed it. Firstly, I was so excited to see you after 5 months. I know. मेरी उस दिन सबसे बड़ी excitement यही थी that oh God, I'll get to see my friend. So रमदीप बार-बार कह रहे हैं कि रत्नदीप कि प्लीज एक गाना गाइए. ये क्या है? डूबे ही मेरी, कौन सा गाना है? आप देख पा रही हैं अलका? रब से नहीं कोई नहीं दिखता. अच्छा, मैं ये बात तो पूरी कर दूं पहले, जो आप काइंडनेस की बात करी थी. मैं बोली थी जो बच्चे होते हैं ना, एज यू नो, दे आर वेरी सेंसिटिव एंड दे गेट हर्ट वेरी फास्ट. सो उनको क्रिटिसाइज आप नहीं कर सकते, आप उनको प्यार से समझा सकते हो. और जो भी आप नेगेटिव भी अगर बोल रहे हो तो उसको शुगर कोट करके बोलना पड़ता है, तो दिल टूट जाता है बहुत जल्दी. सो यू हैव टू बी वेरी वेरी जेंटल एंड tactful with them, so that not to hurt them, at the same time get across what you're trying to guide them, because misguidance is very bad. Correct बताना भी बहुत जरूरी है. सिर्फ बाबा नहीं कर सकते. And I love kids are there, but I'm very happy. उनका जो एक अलका लेसन इन पेरेंटिंग ऑल्सो, कि आप बच्चों को बताना पड़ता है. अब किस तरीके से बताएं? डायरेक्टली थप्पड़ मार के आवाज से वो भी नहीं कर सकते ना. आई डोंट मीन फिजिकल थप्पड़. अभी कई बार आप वर्ड से भी उनको ऐसे हार्शली बोलते हैं कि इस तरह का चाहता. तो आपको शुगर कोटिंग या मिठास के साथ उनकी गलतियां भी बतानी पड़ती हैं और एक तरह से बताना पड़ता है, थोड़ा टैक्टफुली, ताकि वो उसमें भी वो पॉजिटिव तरह से बताना पड़ता है. जी, आपके इतने फैंस क्या क्या बोल रहे हैं और हम बातें कर रहे हैं, उनकी बात नहीं सुन रहे हैं. तो ये आपके फैंस भी बोल रहे हैं. दोनों के फैंस बहुत प्यारे फैंस हम दोनों के. बट पूनम, मैं एक बात बोलना चाहती हूँ. इट्स सो ऑड नाउ व्हेन आई सी योर ओल्ड फिल्म्स. I didn't know you at that time, and I used to think this actress is so sweet, she's like a doll. I never knew you at that time. और अब now when I see your earlier films, जी हाँ, अब मैं डॉल नहीं लगती हूँ आपको? अभी भी डॉल, अब तो और भी डॉल लगती हो. अब तो मेरी फ्रेंड भी हो साथ साथ. नहीं, ऑफ कोर्स यार. इनफैक्ट किसी ने पूछा है आप दोनों फ्रेंड्स कैसे बने, और कोई ये भी बोल रहा है अगर तुम साथ हो गाइए. अभी क्या लोग आपसे यार, ये अगर तुम साथ होना तो मेरी जान ले ली है. मतलब मैंने इतना गाया है इस गाने को कि मतलब पक चुकी हूँ मैं. पेड़ से गिरने वाला है फल पक के. अच्छा, बाद में ललित इज ऑन आवर चैट. आप उनके लिए कुछ कहना चाहेंगी? उनके बारे में कुछ रिलेशन करना चाहेंगी, एक्सपोज करना चाहेंगी ललित पंडित को? कहाँ है ललित? कुछ चैट में उन्होंने 1-2 कमेंट्स भी दिए हैं, बट मैं आई थिंक ही इज वन ऑफ योर वेरी क्लोज फ्रेंड्स आल्सो. Oh yeah, Lalit and Meena, they are friends. They are one of my very few friends. I don't have too many friends in the film industry. I have associates, I have acquaintances, but friends नहीं है.
तो ललित मीना, वन ऑफ माय वेरी फ्यू फ्रेंड्स एंड वेरी डियर फ्रेंड्स, एंड बहुत मस्ती करते हैं हम लोग, लेकिन अब वही है कि किसी से मिल ही नहीं पाई हूँ, कितने दिन निकल गए, कितने महीने निकल गए। सब एक दूसरे से बिछड़े हुए हैं। तो एक अभी अवार्ड की बात करें तो नेशनल अवार्ड, फिल्म फेयर अवार्ड, ये अवार्ड, वी अवार्ड, स्टार अवार्ड, कितने अवार्ड तो लिए हैं आपने, बट अभी भी आपको अवार्ड लगते हैं उनकी अहमियत है कि क्योंकि पिछले कुछ सालों में हमने देखा है कि अवार्ड थोड़े से पॉल्यूट हो गए हैं। लेट मी पुट इट देखो अवार्ड्स की नाउ in recent times I doubt the credibility of the awards. बस यही बात है, अभी कितने क्रेडिबल रह गए अवार्ड, कितने नहीं, ये कहना मुश्किल है। पहले they were definitely more, अब I don't know, people say, I hear a lot of stories, मुझे पता नहीं क्या है क्या नहीं। We also don't know, हम सुनते हैं कि जो stars, खैर we don't want to do exposure here. Let's not get into on that, but yeah, I don't know how, what is the credibility. बार एक चीज कह रहे हैं कि आप मेरी फिल्म का कोई गाना गाओ जो आपने नहीं गाया, तो क्या हुआ? किसी और सिंगर का भी गा सकती हैं आप। आपकी फिल्म का ऐसा भी मैं नहीं, मेरे कुछ गम गम, किसी की कम कम, कुछ गम गम, ओ सनम हम दोनों साथ रही जन्म जन्म, आ भी जा बाहों में प्यार का हो संगम, गपुची गम गम, किसी के कम कम, गपुची गम गम। Oh, sweet is that song. अच्छा भाई, आपके बहुत सारे फैंस जानना चाह रहे हैं मोहम्मद रफी साहब के बारे में, आप कुछ कहिए, बिकॉज ही इज अनदर, he is another मतलब absolutely unparalleled, unique. Mohammad Rafi ji say, unfortunately I couldn't sing with him, but because I was very little when he passed away. Recordings तो नहीं कर पाई मैं उनके साथ, लेकिन my parents had taken me to his house. उस वक्त उनका वो बंगलो, मोहम्मद रफी विला, उनका जो बंगलो हुआ करता था, तो मम्मी पापा ले गए थे मुझे वहाँ, and I was a little girl wearing a little frock, I went over there, and किसी के recommendation के थ्रू मुलाकात करी, मतलब मैंने उनसे, तो I went to his house, वहाँ बैठी तो he came, very soft spoken person, ever smiling, soft spoken, and इतने आहिस्ता बात करते थे कि सुनना पड़ता क्या बोल रहे हैं। He sat down, he took out his harmonium, सुनाओ कुछ गाना सुनाओ, मैंने गाया, तो कहा बच्ची में बहुत हुनर है, ये इसको बहुत आशीर्वाद है, इसको बहुत, ये मैं कहता हूँ इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है, ये वो, ये बहुत सी बातें करी मुझे। He recommended me to a number of people कि जहाँ इनके पास जाओ, मेरा recommendation लेकर, मम्मी पापा को चिट्ठियाँ recommendation letters दी। Then he asked me कि अच्छा ज़्यादा मैं कुछ बोल नहीं पा रही थी, हालांकि I was very talkative, but इन सब के सामने आके ना मेरी बोलती बंद हो जाती थी बिल्कुल। So I was just looking at him like this. So he said, अच्छा बताओ तुमको मेरा कोई गाना पसंद है? तो मैंने बोला आपके सब गाने पसंद हैं, नहीं कोई एक स्पेशल कोई गाना। तो I said आज मौसम बड़ा बेईमान है। तो he said मैं गाऊं, तुम सुनोगी? Really? And I said, so वो हारमोनियम पर he sang आज मौसम, he sang it for me softly on the harmonium, and I will never forget that moment. That is such a beautiful memory. Yeah, that memory is etched, and that is his expression मुझे सब मेरी आंखों के सामने है। Although I must have been about 8 or 9 years old at that time, but उनकी जो वो पूरी जो माहौल है, उनकी शक्ल, और जब वो गा रहे थे, वो कैसे स्माइल कर रहे थे, मेरे आंखों के सामने, very vivid in front of me. So I think basically वो simplicity जो उस जमाने में थी, जब सोशल मीडिया नहीं था, जब मीडिया इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था और टेलीविजन के 100 चैनल नहीं थे, तो लोगों में अलग टाइप की एक रिलेशनशिप हुआ करती थी। Sometimes I actually miss that, Today our mind has so much of influence. हर चीज जगहों से I know. कोई सच, कोई गलत, कोई there's no purity left. Everything is covered and adulterated, and I don't know. It's थोड़ा सा फर्क तो हो गया है। So I think it's our duty to try and remain as pure and as simple as we can. I think simplicity is the answer.
Don't you think, Alka? I find जब मैं आपको कहती हूँ you're simple or you're quiet, and I feel that is something which keeps us happy from inside. Exactly. हम कॉम्प्लिकेट करेंगे और हमारी वॉन्ट्स बढ़ाएंगे, हमारी नीड्स बढ़ाएंगे. अच्छा पूनम, एक बात और है, ये जो वक्त निकला है और निकल रहा है, this has taught us how little we actually need in life to live. Yes. हमें Absolutely. I realize that totally कि जो हम 8-10 कपड़े पहन रहे हैं वही पहन रहे हैं. शॉपिंग कर करके कपड़े ठूसते जाते. अभी तो मुझे याद भी नहीं कि क्या है कपड़े क्या नहीं. We don't need all this actually speaking. These are liabilities which we take on and we feel ये हमारे लिए बहुत जरूरी है. लेकिन come to think of it, जिंदगी जीने के लिए ये सब तामझाम की जरूरत ही नहीं है. और खुश जिंदगी जीने के लिए. हाँ, और खुश रहने के लिए, खुश तरीके से जीने के लिए. सही बात है. सही. All you need is you realize how important it is to have your loved ones and your close people around you. You miss that. You don't miss your clothes and this and that and functions and parties and events. You miss having your loved ones around you. ओके भाई, ये उदित कोई बोल रहा है. उदित के बहुत फैन हैं जो चाह रहे हैं आप उदित के बारे में कुछ बताएं. उदित जी के बारे में मैं क्या कहूँ? क्या बोलो? He's a unique personality. He's got his own style and a terrific singer. Of course, I love his voice quality. He's got a beautiful, wonderful voice, very unique and very उनकी अपनी आइडेंटिटी है. बहुत से गाने चेहरे पे हमेशा गाते वक्त कभी स्माइल, मतलब नॉर्मली सिंगर ट्रेन करते हैं गाने के लिए, उदित जी की स्माइल बरकरार रहती है चेहरे पे. स्माइल बरकरार रहती है. कभी कभी वो सैड गाने भी हंस के गाते थे. तो वही जतिन ललित का गाना था, वो सैड सॉन्ग था, वो हंस के गा रहे थे. तो वो डांट रहे थे उसको कि क्या कर रहा है तू, ये सैड गाना है, इसमें क्यों हंस रहा है तू. अच्छा सर, मैं करता हूँ सर. सो बट बहुत ही हंस के पेट दर्द हो जाता है उनकी बातों से. बट ही ऑफ कोर्स मुझे बहुत, he teases me a lot, troubles me a lot, flirts a lot with me, but ऐसी मस्ती मजाक चलती है. बट हम लोगों ने काम बहुत अच्छा किया साथ में. और हमारे गाने भी एवरग्रीन हैं, तो हमारे लाइव कॉन्सर्ट्स आर ऑलवेज वेरी वेरी सक्सेसफुल. अच्छा, अभी बावड़े के गली में आज चांद निकला, अभी उसकी भी डिमांड आ रही है. मैं क्या करूं, आपके हैं ही फेवरेट गाने, तो व्हाट कैन आई डू? अच्छा, मुझे कितना लगता है कि मैं ऐसे गाने गाऊं कभी जो कॉमन ना हो इतने, तो लेकिन घूम के लोग वही. पर अभी ये जो डिमांड आ रही है, मैं कोशिश कर रही हूँ. हाँ, बस वही होता है. ओके. तुम आए तो आया मुझे याद, गली में आज चांद निकला, जाने कितने दिनों के बाद, गली में आज चांद निकला, जाने कितने दिनों के बाद, गली में आज चांद निकला, गली में आज चांद निकला, गली में आज चांद निकला. तुम आए तो आया मुझे याद, गली में आज चांद निकला, जाने कितने दिनों के बाद, गली में आज चांद निकला. थैंक यू सो मच. पता है, इतने लोगों के नाम मैं लेना चाह रही हूँ जो आपको इतना प्यार दे रहे हैं. I mean, I can't even tell you what is the kind of craze the people are saying, how much they love you and thank you and for your lovely songs. That's why I'm still singing. You said, no, how come you're still? This is the reason. Nothing really? else. So do you enjoy stage shows now more than live singing? क्योंकि मैंने आपकी अदाएं देखी हैं आजकल स्टेज पे. You are much more, you know, comfortable, और आप जिस तरीके से गाती हैं. Yeah, once I'm on stage and there's a live audience in front of me, I'm a different human being. I'm a different person. I'm in a trance, in a different world. Yeah, amazing. I love live concerts, but अब मैं, मुझे वही तकलीफ हो रही है कि पता नहीं लाइव कॉन्सर्ट कब होंगे, कैसे होंगे. वो भी है. वो जो having a huge crowd. इस मुसीबत से निकलेंगे and life will come back to normal. But more important है जो हमने लेसन सीखे हैं इस वक्त पे, अच्छे लाइफ के पॉजिटिव मैसेज, उनको
भूलना नहीं चाहिए जो चीजें हमने सवाल ही सीखी नहीं हैं. है, सवाल ही नहीं है. That is something which people should remember all your things. So I got quickly one thing. You are one of the most glamorous singers. मतलब आपको कभी एक्टिंग के लिए ऑफर की थी कि आप फिल्मों में एक्टिंग भी कर लो और ये आई थी शुरू में जब मैं आई थी ना, तब एक्टिंग के ऑफर्स आए थे राजश्री प्रोडक्शन से, फिर यहाँ से वहाँ से. बट आई यूज्ड टू बी, अब तो मैं बहुत बात करती हूँ, आई यूज्ड टू बी अ वेरी रिजर्व्ड एंड अ शाय पर्सन. So there was no question of my getting into acting, and my mom was saying नहीं ये सब नहीं, गाना गाना गाना. तो मेरे से ज्यादा शाय आप नहीं हो सकती थी. मैं इतनी शाय थी कि I had never spoken in front of an adult literally from a convent school girl. तो आप तो कर ही सकती थी. You knew how to. पता नहीं, मेरा I didn't have the confidence. I didn't know whether I would be able to act or not, or whether I would be able to singing. So I wanted to stick to what I knew I could do. I could do well. So I stuck to that. And वैसे हम जो प्लेबैक सिंगिंग करते हैं, that is our acting behind the screen. आप कैमरे के सामने नहीं है, बट हम जो गाते, स्पेशली प्लेबैक सिंगिंग, इट्स कंप्लीट एक्टिंग. अगर आप एक्टिंग करके नहीं गाएंगे, so there is an actor in me, but I don't want people to see me. I'm that, you know, वो एक्टिंग निकलती थी माइक के सामने. कोई भी फिल्म का गाना गाओ तो I had to act it out in front of the mic. तभी तो वो एक्सप्रेशंस आएंगे कि एक एक्ट्रेस उस पर इमोट कर सकेगी. तो हम भी एक्टर ही हूँ मैं भी, मगर आई एम द बिहाइंड द सीन्स actor I would say. The question was starting with that कि what do you do to keep looking so good, glamorous, your hair, your skin and everything. आपकी मतलब I have to ask you because आप सब सिंगर से ये बात नहीं पूछ सकते, उनसे आवाज के बारे में पूछ सकते हैं, आपके ब्यूटी के बारे में भी पूछ सकते हैं. So what do you do? How do you look after yourself? Poonam, most of it is genetic. Most of it is genetic. You know, not much effort has to be made, except that the fact that थोड़ी बहुत exercise करती हूँ जो पहले नहीं करती थी, अब करती हूँ. And that's it. Nothing else. No deliberate face packs and hair spas and all. Nothing like that. कुछ भी नहीं. It's mostly genetic. Natural generation वाले लोग हैं. Thank my parents. What do you do to your skin? What do you do to your hair? मैंने कहा मैं तो साबुन भी यूज नहीं करती हूँ फेस के ऊपर. मैं वही बोल रही हूँ, आप मुझसे पूछ रहे हो सवाल. You should answer this question. Look at you. अरे नहीं, because you are one of the most glamorous and beautiful singers, you know. So that is something I wanted to ask you. तुम you are prejudiced ना, तुम मेरी सहेली हो इसलिए ऐसे बोल रही हो. सब बोलेंगे, कोई भी पूछ सब बोलेंगे. Also, I always find you very well turned out. As you said, अभी हमारे पास कपड़े कुछ ज़्यादा ही हो गए हैं. But I know you are always well dressed. So आप खुद का आपका choice है कि only your designer creates your look. कि आप जहाँ जाते हैं. Basically, as you know, my friend Seema, she kind of puts things together. Mohini does a lot of clothes for me, and then I buy designer clothes, whatever I feel. See, I am not into brands. I know what suits, what drapes well on me. So I've got that andaz aankh ki this will drape well on me. So I go by my choices. Okay, this is okay for me. चाहे वो Vogue में हो चाहे ना हो. It doesn't have to be in something which is in fashion or in. Aapki well turned out is a combination of your good taste and your friend Seema and Mohini being the. Yeah, of course it's a combination. Of course it's a combination. My friends also know what I like, so accordingly they do it for me. Yeah. So and I don't like wearing revealing clothes, so that's something I don't do. I'm not comfortable. Yes, I feel that. I've always found you graceful. अच्छा अभी आपसे एक तो सवाल, you know, I'm just looking at the time and wondering, do you have to run or can we talk for 5 more minutes? Yeah, we can. 5 more minutes. Yeah, sure. Okay. Sure. Tell me, if you had to choose giving music for a film as a composer, would you be interested to do that? Are you bound? I mean, are you inclined towards that? कि मैं कभी-कभी कोशिश करती हूँ. I can do it, but then I need someone who will put it well together. So basically, have you everything well together. Have you learned any instruments which can be helpful to a singer? Like no, that's something I really regret.
Yeah, see, that is the problem. But I regret this today. I wish I had learned some instrument. Maybe the piano or even the harmonium. I really can't play properly. I can just about play enough to do real on it. That is something that लाइफ के रिग्रेट्स बोले तो आई हैव सम रिग्रेट्स आई विश आई हैड परस्यूड सिंगिंग मैं बहुत खुश होती अगर किसी के भी जब भी कोई बोले अब एज एन एक्टर आप कहीं पे भी अपना टैलेंट नहीं दिखा सकते हैं एज अ सिंगर आप कहीं पे भी जाके गा सकते हैं आई विश आई हैड ग्रूम माय वॉइस दैट्स माय वन रिग्रेट व्हाट इज योर वन रिग्रेट इन लाइफ कि मैंने ये क्यों नहीं किया या छूट गया मेरी लाइफ में My one regret is that I couldn't spend any time with my father when he was just before he passed away. He wasn't well, and we didn't realize. We knew he was not well, but I didn't realize the enormity of the that he was going to go bad away health that he was, because he used to always say, नहीं ठीक है कुछ नहीं लग रहा मुझे मैं ठीक हूँ. And my career was like kind of soaring at that time. He passed away in 1994. February, and I was like doing 5-6 live recordings every day those days, from studio to studio. So he used to tell me sometimes कि बेटा don't overwork, काम इतना ज़्यादा मत करो, get some rest also. He used to tell me, and फिर कभी कहते थे वो मुझे कि आप मेरे पास बैठ 5 मिनट. I said, पापा they are all waiting in the studio, I can't, ना देर हो जाएगी, फिर I have to go here. They say अच्छा ठीक है. And one fine day, very soon he just collapsed, and he was at home only, collapsed, his head fell on my lap, and I really regret that. I wish वो जब बोलते थे 5 मिनट मेरे पास बैठो तो मुझे बैठ जाना चाहिए था. उस 5 मिनट में मैं क्या तीर मार लेती. Alka, even I have the same regret. I lost my father very young also. And माँ बाप बच्चों से सिर्फ यही चाहते हैं कि थोड़ा टाइम दो हमें, हमारे साथ बैठो, हमसे बात करो, शेयर करो हमसे. And Papa used to never say, he used to never tell me. हमेशा कहते थे नहीं you do your thing. And he was not that ambitious kind की और गाने का इतना काम मत करो, आराम करो. Then how old was your dad when he passed away? He was about 59, 60 nearly. See, my dad was 58. So it's a very, very young age to go. So I think, use this opportunity to tell all our people, young ones and not so young ones, who are lucky to have their parents with them. मुझे लगता है दुनिया की सबसे खुशनसीब वो लोग हैं जिनके माँ बाप का साया बहुत समय तक उनके सर पे रहता है. After losing both my parents, I realized that there's nothing, and my life has changed completely. I'm a different person after they have gone. It's never the same. Yeah. The true happiness. I'm just reminding you people who are lucky to have the parents. Really? Please उनके साथ irritated और उनको क्यों मॉम पूछते हैं, क्यों डैड पूछते हैं, क्यों मेरे से मांग रहे हैं टाइम कि आके बैठो बात करो, ये चीजें मत सोचो. ये सोचो कि ये कुछ दिन के लिए थी. डेथ इज इनएविटेबल. सबको जाना है, माँ बाप को भी जाना है, सबको जाना है. बट आपसे पहले माँ बाप जाएंगे और आपको फिर बहुत अफसोस होगा कि कब मैं उनके साथ वक्त नहीं बिताया. जितना टाइम उनके साथ बिता सकें at the cost of losing some work here and there. Work is important, but अपने पेरेंट्स के साथ टाइम बिताना बहुत जरूरी है और उन्हें बहुत प्यार करना जब तक वो इज्जत देना, प्यार करना बहुत जरूरी है. So these are the 2-3 things which we all feel we've learnt in life. हम लोगों ने जिनके पेरेंट्स जल्दी चले गए. फातिमा, आपको हैप्पी बर्थडे बोल रही हूँ. और अलका, आपके जो बार बार फैंस पूछते जा रहे हैं कि आप अभिजीत के साथ गाए हैं, उनके बारे में बोलिए, कुमार शानू के बारे में बोलिए. तो आप थोड़ा अपने को सिंगर्स के कुमार शानू के बारे में क्या बोलूं. हम लोग की जोड़ी बना दी थी, मतलब बन गई थी. ऑल दोस रोमांटिक इंटेंस सॉन्ग्स व्हिच वी sang, एंड वो बिल्कुल एक दौर था ऐसा कि हम लोग, शानू जी और मैं, स्टूडियो में साथ ही सुबह से रात तक गाने गाते रहते थे, रिकॉर्डिंग्स करते थे. तो उन दिनों लाइव रिकॉर्डिंग्स भी होती थी. So it was like one nice, a lot of work, lot of laughter, lot of masti, lot of good work, beautiful songs. शानू जी के साथ बहुत स्टेज शोज किए हैं. We shared a very good comfort level and a very good chemistry on stage. We have a lot of fun when we're doing concerts and मस्ती मजाक. Do you all talk in Hindi? बंगाली connection है हमारा बहुत strong because I'm also from Bengal. तो हम लोग we talk in Bengali only. So that little बंगाली वाला
उसको भी मिठाई और मछली और वो सब हम लोग सब we like all the same kind of food and all. So yeah, actually when I was singing a lot of songs, mainly कुमार शानू और उदित नारायण ही ज्यादा गा रहे थे मेरे साथ गाने. हालांकि I sang with अभिजीत, quite a few songs with अभिजीत, good ones. सोनू के साथ भी है, शान के साथ भी है, but majority गाने मेरे शानू और उदित के साथ. अच्छा एक बात बताओ, any songs, somebody asked a question also कि आपने शायद रोजा के गाने फिल्म को मना किया था. Is that true? Yeah, that's true. Unfortunately. Because you know what, I tell you, A.R. Rahman का नाम उन दिनों कोई जानता नहीं था, नए he was a newcomer, and he used to record only in Madras. It was called Madras at that time. So I was doing a lot of recordings in Bombay, and my date diary used to be packed. कि ये स्टूडियो से स्टूडियो, नदीम श्रवण का गाना, फिर अनुमली का गाना है, फिर जतिन लेस का गाना है, फिर आनंद मिल का गाना है, फिर राजेश रोशन का गाना है, फिर इसका लक्ष्मीकांत प्यारलाल. तो I was like, I had a full diary, and अचानक ये फोन आता है मद्रास से that I am assistant of Mr. A.R. Rahman, he's an upcoming music director. He's a fan of Madam, you and Kumar Sanu, and he's doing a film in Hindi called Roja, and he wants you and Shanuji to sing all the songs for his film. So I said, okay, but actually I don't have the dates because I've given out dates here. I said, Madam, it's very important because you have to shoot and all and this and that. So I said, okay, I'll let you know. So I spoke to Kumar Shanu. I asked him कि he said हाँ हमारे पास भी फोन आया था, ऐसा कोई कंपोजर है यार रहमान, पता नहीं कौन है, कोई आया है नया, so उसके लिए तो तुम जा रहा है क्या, तुम जाएगा क्या, ऐसे कैसे जाऊँ, सब डेट दिया हुआ है. हाँ छोड़ो हम भी नहीं जाएगा, हमारे भी सब यहाँ रिकॉर्डिंग्स है. ऐसे हाँ हम लोग ने तो एक्चुअली वी वर कमिटेड, प्री कमिटेड. तो अभी didn't give it too much of importance obviously. अभी एक तो पता नहीं था कौन है, नया नाम था, वो भी मद्रास जाके गाना है. तो we said नहीं, हम लोग फ्री नहीं है, हम लोग नहीं आ सकते. But when the songs released, and when I heard the songs, I hit my head on the wall. I said, what have I done? What beautiful songs, what a composer, what music. And after that, I did a lot of work with A.R. Rahman, but he used to tell me also, you did not sing my Roja songs. So sweetly he used to say it. So that's another regret. Yeah, that is हमारे फैंस, आपके फैंस बोल रहे हैं सूरज हुआ मध्यम की कुछ लाइनें गा दो प्लीज प्लीज प्लीज. मैं क्या करूं, मैं अपनी मर्जी से नहीं बोल रही हूँ. हाँ ठीक है कोई बात नहीं. सूरज हुआ मध्यम, चांद जलने लगा, आसमां ये हाय क्यों पिघलने लगा, मैं ठहरी रही ज़मीं चलने लगी, धड़का ये दिल सांस थमने लगी. हो क्या ये मेरा पहला प्यार है सजना, क्या ये मेरा पहला प्यार है. क्या बात है. थैंक यू सो मच. आई थिंक आपके फैंस तो कभी बोलेंगे इनफ. तो अभी कहीं ना कहीं हमको अच्छा जैसे प्लीज ब्रिंग द ट्रियो बैक ऑफ सोनू निगम एंड उदित एंड अभी सबको साथ में तो नहीं ला सकते ना, साथ में कैसे ला, but they want to see all your favorite singers in your show. They are saying we have done a whole tour in the US, me, Shanu and Udit together recently in fact, and we were to do the next tour of us, a continuation of that this year, but then of course because of COVID everything got postponed. Let's see now अब कब होगा. और हमने इनफैक्ट रियलिटी चाहिए, सब साथ में बहुत मजा आएगा. हाँ मजा तो आता है. अच्छा आज के सिंगर में आपका कौन सा फेवरेट सिंगर है?
today's current female singer and a male singer? कौन आपके? I can't point one. Very difficult. इतना टैलेंट भरा हुआ है and every day there's new talent coming. और इतना अच्छा गाते हैं, मतलब as you came the other day also, these little children, how they sing with so much of maturity. So there is a constant, there's an overflow of talent. Absolutely. अच्छा, हैप्पी बर्थडे अवनीत, आपका भी बर्थडे है, आपको विश कर रहे हैं. अलका जी आप भी विश कर दीजिए फातिमा को, अवनीत को. दे आर प्लीज आस्किंग से वंस. रियाज अवनीत की बर्थडे है. हाँ, अवनीत की. रियाज को भी प्लीज. हैप्पी बर्थडे टू यू, गॉड ब्लेस. यस. अच्छा, अभी आप रिजवान का भी 1 मिनट नाम ले लीजिए, क्योंकि वो 2000 बार बोल चुके हैं. प्लीज उनको आप. किसका नाम? रिजवान. क्या बोलूं उनको? आपके फैन है रिजवान जी. थैंक यू फॉर ऑल योर लव एंड आई विश मैं आप सबसे 1-to-1 बात कर सकती, लेकिन आपको पता है मुमकिन नहीं है. कम से कम हम लोग पूनम के थ्रू कनेक्ट, तो पूनम ने हमको कनेक्ट तो कर दिया है कम से कम. सो थैंक यू फॉर बीइंग विद अस टुडे. Okay, Alka, I'm going to let you go here before you say बहुत हो गया. अभी मुझे जनगण मन नहीं शुरू कर देना. नहीं, तुम्हारे साथ मैं नहीं बोलूंगी बहुत हो गया. अच्छा, एक पूनम भी है जो उनका नाम लेना चाह रहे हैं. भाई पूनम टू पूनम बिल्कुल लेंगे. What do you feel is lacking in today's music and what do you think is the best thing of today's music? मतलब एक जो आपको लगता है आज का म्यूजिक खराबी क्या है और बहुत अच्छी चीज क्या है? देखो, आज का म्यूजिक what I feel is lacking is soul. Soul is lacking. I don't know, it doesn't touch me at least. Yeah, बहुत कम है. 100 में से 2-3 होंगे जो बहुत. हाँ, there are too many gimmicks. There are too many gimmicks in songs. Too much of experimentation. Too much of changing tone बदल देते हैं आवाज का, म्यूजिक का. I don't know. The purity has gone. It's too adulterated and that people are too busy trying to make the music happening कि hit हो जाए, super hit हो जाए. So वो कहीं वो purity नहीं है. And the best thing is very difficult to say. I don't think there's any best thing as of now. They are good to play in parties and dance and have a little fun. That is true. और वो seasonal है. अभी उसका season खत्म हुआ है. Seasonal. So here Angel is saying, though I am a teenager, I love old music and I love that kind of thing. So I think वो eternal music, soulful music, वो चीजें पुराने गानों में जो थी, आपके गानों में, लता जी के गानों में, आशा जी के गानों में. अरे हमारे गाने तो छोड़ दो. The best, the golden era जो था 60s, 70s, 60s, उसका that is unparalleled. That is true. We have grown up on that. एक ये दुआ है मेरी सबसे, क्या मतलब आपके सारे गाने. अभी मैं किसी और की रिक्वेस्ट नहीं लूंगी because Alka will later call up and. कौन सा गाना? अच्छा अलका, अभी आपकी आज की दौर में which film are you watching? A lot of things on television and on OTT platforms. Yes, I am. आप watching a lot of films and watching a lot of films. हाँ, वही हम लोग का सबका उसी में ही अच्छा टाइम पास हो रहा है. बल्कि that also is a boon as of now. That's the only way we can pass our time, and there are some nice movies, very good movies also. और मैं एक चीज आज के दौर में, क्योंकि ये बहुत करंट टॉपिक है, and I as an actor feel as very strongly about it, and you I'm sure as a singer, कि इंडस्ट्री को सडनली बहुत बुरी तरह से बदनाम किया जा रहा है. तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है? फिल्म इंडस्ट्री इतनी ज्यादा मतलब अच्छा बुरा हर जगह होता है, लेकिन यहाँ का क्या है ना, सब चीज को बहुत ज्यादा उछाला जाता है ना, because they are in the news. That is the pros and cons of being a celebrity and being famous. यही तो है. But also people from within the industry to get some importance in time sometimes are saying things which are sensational. I feel, you know. I guess everybody wants their 2 minutes of fame. You know, कहीं कुछ बोल दिया, कहीं कुछ. और आजकल तो सब because of social networking, anybody can say anything. You know, उसको सबको उठाकर कुछ भी बोल के डाल दिया उसमें. तो
I just want to tell people कि हर इंडस्ट्री में अच्छे और बुरे लोग होते हैं, ऐसी कोई इंडस्ट्री नहीं है, चाहे आप एक प्रीस्ट हो या नन हो, उसमें भी खराब और अच्छे लोग होते होंगे, चाहे आप भगवान का नाम ले रहे हो, उसमें भी गंदे और अच्छे लोग होते हैं, टीचर्स में भी, और हर इंडस्ट्री में होते हैं। तो जाहिर है फिल्म इंडस्ट्री भी इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, कुछ खराब लोग भी होंगे, कुछ अच्छे लोग क्या भी होता है, अगर कोई सपोज कोई कंपनी है, उसमें किसी ने किसी को थप्पड़ मारा, people don't care कौन है किसने। अब यहाँ फिल्म इंडस्ट्री में फलाने एक्टर ने उसको थप्पड़ मारे, नाउ दैट बिकम्स वन बिग थिंग, मॉर्निंग नाइट वही। तो अभी आप जो है नाम वाला वही तो बदनाम है, बात यही है। सही बात है। और कहाँ अटक गई? आपको खाना बनाने का शौक है? डू यू कुक? एक्चुअली ऐसा नहीं है कि शौक नहीं है, बट आई डोंट नो, आई somehow never got down to doing it. पहले it was my mom who was taking charge of everything. Thereby, after that, I got so busy, so I did not really have the time or actually not even the inclination so much, because whatever time I used to get, I wanted to chill. And now my daughter is a very good cook, so she keeps making things for me. Or not really. There's something, I don't know, I still want to do it. Let's see if I ever get down to doing it. अपनी बेटी से सीखे और कुछ चीजें अपनी बेटी से सीखो। बेटी के पास टाइम हो तो ना, वो अपनी उसकी अलग दुनिया है अपनी। नहीं, but she's an amazing cook, and आपके घर में whenever we return, fabulous presentation, very warm and lovely host that you are. और I think with that, हम का कोई गाना है आपका फेमस जो बार बार बोले प्लीज 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 प्लीज, मतलब क्या? किसका गाना? हम एक दूसरे से करते हैं प्यार हम, एक दूसरे के लिए बेकरार हम। ये तो हमारा गाना है, हमारे दोस्तों का। Wonderful song to end the chat with. एक दूसरे के वास्ते मरना पड़े तो है तैयार हम, है तैयार हम, एक दूसरे से करते हैं प्यार हम एक दूसरे के लिए बेकरार हम। Thank you, Alka. It was so wonderful chatting with you. And वक्त ऐसे गुजर गया, अभी भी दिल नहीं भरा, and I think सुनने वालों का दिल भी नहीं भरा है, but क्या करें, थोड़ी सी मतलब हमको सेल्फ कंट्रोल रखनी पड़ेगी। Thank you. Pleasure, thank you. Pleasure for me, and hope to see you soon. Take care. Love you. Love you too.